Welcome to part 2 of the final episode in the Tailwind series. इसमें we are going to cover the rest of the video, rest of the project that is pending. Let's start. ठीक है, अब यहाँ पे skeleton था ना, ये skeleton 2, I'll do mask radial. तो ये यहाँ radial mask आ रहा है कहाँ पे मुझे पता नहीं, but instead I'll have it skeletons कहाँ है इसके, card content, card description, card skeleton. This takes a class name, right? So I'll give it a class name of radial from 50% and not needed. So you see this is a bit faded. Now I can do better maybe. Mask T from 50% ताकि थोड़ा ऊपर से भी faded है. तो I need it a little faded only. मेरे को ज़्यादा stark नहीं चाहिए. Message convey होना चाहिए उतना चाहिए. ठीक है, this works. We'll improve this later on. एक बार ये website पूरी हम last में सारी revisit करेंगे and we'll look for opportunities where we can have micro interactions and stuff. अब ये वाले icons भी मैं copy कर लेता हूँ फटाफट. Export const, what is it called? Workflow icon props, return this and add in props. Similarly, I'll add this, copy as SVG, integration icon. ये मैं कर दूंगा और यहाँ पे props डाल दूंगा. Finally, I'll have this icon, human icon बोल देता हूँ, props and return this, add this to school and I'll add props. Now there are a lot of errors here. ये stroke, line cap, line join वगैरह वगैरह के होंगे that I'll try to fix. फटाफट ये बना लेते हैं भाई. आइकॉन चाहिए, टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए. तो विल गो टू अगेन, वेयर वाज इट, फीचर सेकेंडरी में होगा हमारे पास. कंटेनर के बाद वी नीड प्रॉब्ली ग्रिड. Grid calls 1 MD, grid calls 3, gap 10. First will be workshop items center gap 2, workflow icon, and it has to say workflow automation. I'll keep it as H2. Class name font bold, text LG, text neutral 600, and maybe H3 this can be. And then we have got outside of this, we'll call it a simple div, and we've got a p tag here. Class name would be text neutral 500, text base वो वैसे भी रहता है, लिख दो, ना लिखो कोई फायदा नहीं. And now we have this. So this is what we are getting. Flex में ये अंदर चाहिए and maybe MT2, this will work, and maybe MT10, MD, MT20. So ये हमारे पास में आ गया है, which is fine, which would work. Similarly, we'll have connect CRMs and whatever. And third part which you have here is cool. ये आ गया हमारे पास में. इसको थोड़ा मोबाइल रिस्पॉन्सिव टेस्ट कर लेते हैं कि करता है काम कि नहीं करता है, जो कि अभी नहीं करेगा प्रॉबेबली. ये बॉर्डर्स जो है डिवाइड एक्स मुझे नहीं चाहिए पहली बात तो. डिवाइड एक्स की तरफ है और एमडी पे चाहिए. एमडी पे कैसा लग रहा है? And instead of divide x, I can maybe call it divide y. Divide x, divide y, md, divide y 0. And you have this line over here, which is nice to have. और ये हमारा already है. तो ये section हो गया भाई. Moving on to the next section, which is this. This is my favorite section because it is such a simple thing to build. Speed वाला section था. I'll just copy that and I'll call it outcomes. Outcomes section, or just outcomes is fine. I'll go to page and I'll paste in outcomes. ठीक, outcomes governed AI. इसलिए मेरे को components बनाना पसंद है भाई. Reusable. Devs try to optimize for 10 hours for the work that they could have done in 10 minutes. That's just who we are. Maybe I'll change the screenshots to 5 and 6. Governed by outcomes वाला section हमारा आ गया है. और मेरे को एक चीज़ और करनी है भाई. ये जो animate हो रहा है ना लैंडिंग इमेजेस में, इंस्टेड ऑफ एनिमेट आई नीड इट वाइल इन व्यू. तो ये बार बार हो भाई, क्योंकि एक बार में आ जा रहा है तो एनिमेशन का मज़ा नहीं आ रहा है. ठीक है, अब ये लग रहा है ना स्टाइल आ रहा है थोड़ा. दैट्स व्हाट वी नीड. तो इतना सही चेंज होता है भाई वाइल इन व्यू वाला. दिस वर्क्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन.
which is this again gonna take a lot of time, but let's build this. उसके बाद तो बहुत कम बचा है, and we'll wrap this up. Okay, let me think it through. This would be easy, but a lot of icons. Mostly time will go there. Role-based access. This is okay. This is easy. I can just copy paste it from the above, which is this. It'll be easy again. This will be feature section third. फीचर टर्शरी बोल सकते हैं, बट मोस्टली टाइटल डिस्क्रिप्शन सेम है, तो वी कैन कॉपी पेस्ट दोज कार्ड कंपोनेंट्स हियर. Tomorrow if you want to change it we can. This is nice for now, so what I'll do is I'll just copy paste that entire folder. I'll call it features. ये तुम्हारे पास में आ गया. आपको पता चलेगा आपको ये ऊपर वाला ही चाहिए, नीचे वाला नहीं चाहिए. We'll probably remove that. Not probably, we'll definitely remove that. We don't need this. ठीक है. First has to be audit trail, and the copies track everything and whatever. Do track everything. Fucking keep on track. Role based. Second is role based. Text is बहुत कॉपी पेस्ट है भाई, सो बेयर विद मी. अब हमें क्या चाहिए, हमें यही डब्बा चाहिए. इंस्टेड मैक्स विड्थ नहीं चाहिए इसमें. एंड अंदर का सामान कैन स्टे द सेम. इंस्टेड इट इज़ अ टेबल और अ फ्लेक्स ग्रिड, विच एवर वर्क्स फॉर यू वर्क्स फॉर मी. पर पहले ये वाला बना लेते हैं, इसको ही थोड़ा ट्वीक कर लेते हैं फर्स्ट स्केलेटन को. और हमें कार्ड एक ही चाहिए, मतलब ये वाला कार्ड नहीं चाहिए, ये वाला कार्ड नहीं चाहिए. तो देखोगे ये काम कर रहा है. मैक्स विड्थ का जो चोंचला था वो नहीं चाहिए, तो मैक्स विड्थ हटा देंगे. एब्सोल्यूट इनसेट 0 है, इनसेट 10 डाल देंगे ताकि थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए और आपको दिखने लगेगा ये आ गया है. और ये जो कार्ड है इसकी मैंने कुछ हाइट दी है क्या, फ्लेक्स 1 दे देता हूँ. अब ये कार्ड भी पूरी हाइट ले रहा है. ये फ्लेक्स 1 ले रहा था PTPX4. इट इज नाइसली अलाइंड. थोड़ा सा मैं इसको नीचे भी लेके जाऊंगा भाई. इनसेट Y2 ताकि थोड़ा नीचे हो. राउंडेड में इसका करना चाहता हूँ TR ओनली, which is going to be 16 pixels. So now it is top right नहीं, top left. Left 0 हटाना पड़ेगा. Now you have this which closely resembles this structure, which is exactly what we want. Another pain in the ass is these icons. Copy paste करते हैं भाई, क्या करे जाके. So I'll call it icons, bento icons or grid icons, whichever works. Bento icons dot tsx. Export const first icon, pass in the props. फटाफट ही कर लेता हूँ यार. पहले चाहिए flex item center gap to recent activity icon, and give it a p tag recent activity. This can be class name. Text LG font bold add lib with it, and you'll see this is what we have. एक इसको बॉर्डर भी देते हैं, एक तो इसको विड्थ फुल दे देते हैं, एंड PB2 दे देते हैं. अब जितनी भी पैडिंग है इससे हटा देते हैं, और पैडिंग इसको दे देते हैं PX4. कूल. PY ही कर दो भाई, खुश रहेगा. रीसेंट एक्टिविटी तो छोटा हो सकता है, ये सारा कुछ ही छोटा रखूँगा भाई मैं, छोटा भाई. Now we have got these beautiful things going on here. First, what I'll do is I want to maybe create an array that I'll do later. This has to be flex justify between item center, and this again has to be flex items gap 2, and first is icon and container. So div class name would be size 4 rounded SMBG blue 500. Text can be white, and this has to be first icon. ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट साइड का आइकॉन. देन वी गॉट अ p tag. class name would be text sm text neutral v600, and it has got to say personalized emails. And third is a box or a badge, whatever you want to call it. I do not want to customize it. I want to pass in a directly component from here ताकि मेरे को ज़्यादा इससे खेलना ना पड़े. So I'll just create that component 15 seconds. So I'll do this only. Gap to clock icon clock, and it has to say 15 seconds. So class name text sm text neutral 500. इसका border है भाई, तो px1 py 0.5 rounded sm
बॉर्डर न्यूट्रल 200। ठीक है, देख लेते हैं कैसा लग रहा है। ये तो कहीं और ही चला गया भाई, यहाँ नहीं चाहिए, हैज़ टू बी फ्लेक्स कॉल, तो यहाँ आ गया। साइज वाला जो था हमारा चाहिए फ्लेक्स आइटम सेंटर, फ्लेक्स ऑलरेडी है, आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर सो दैट यहाँ आ जाए। पर्सनलाइज्ड ईमेल, ये बहुत ही गंदा लग रहा है, विच आई फिक्स। साइज 3 गैप 1 आइटम सेंटर। Now you see this rounded can be bigger, MD. Text can be shorter or font bold, neutral 600. This can be 1 and text can be really short, 110 pixels, 15 seconds. Okay, this is 1. इसमें ठीक है, justify between है ना। अब हमारा चाहिए हमें description, which is this P, and this will be description. Text SM text neutral 600, which is justify between होना चाहिए width full, that goes all the way, PL4, so that it is rightly aligned, and text neutral can be 500, and it can truncate but it has to be relative and overflow hidden। करके देखते हैं इसका, अभी मैं वो रिक्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, बट देखते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू generalize it, and that's exactly what I'm going to do. It has to take icon, which is the top icon, title, badge एंड डिस्क्रिप्शन। आइकॉन्स नहीं दोस्त, आइकॉन रिएक्ट नोड होगा, टाइटल स्ट्रिंग होगा, डिस्क्रिप्शन और या डिस्क्रिप्शन आल्सो स्ट्रिंग, एंड टैग्स वुड बी नथिंग, वी डोंट नीड टैग्स, वी नीड अ बैज एंड इट विल बी रिएक्ट नोड। ठीक, अब मैं एक और चीज़ करता हूँ भाई इसमें, ये कार्ड मैंने पास कर दिया, और icon would be, instead of this I want to pass in the entire thing, which is this, because I also want to pass in the background color, but I really don't want to pass in the, I could have done it but I want to keep it really simple, so I'll call it icon. This thing I can pass in from here। ठीक है, टाइटल डिस्क्रिप्शन बैज, अब ये अपने आप ही कर देगा भाई, बैज आ जाएगा हेयर, ये भी हटेगा, इंस्टेड ये पूरा हटेगा भाई, दिस विल बी बैज हेयर। राइट से डाल देंगे हम ब्लर वगैरह जो भी हमें डालना है, बट अभी के लिए इतना ठीक है। एंड इफ आई वांट टू जस्ट कॉपी पेस्ट दिस, this is going to paste the entire thing, so this cannot be inside of the card, this can be card content, and this can be a card item. So I'm going to refactor this really quickly. It is going to be card item, let's say it card item, and card would be the outer div that you see here, along with children, और साथ में ये भी ले ही लो। ठीक है, कार्ड हेडर बोल सकते हो, whatever you want to call it, you can call it. So what I'm essentially doing is, now this card container or card has to wrap this so that you have things in place. This is going to be the same, except we are going to copy paste this card item. This works. Now I could have passed in different background colors and standardized this a bit more, because I see a lot of things getting pasted. I mean, for example, this, right? I can pass an icon class name, icon, ठीक है, और ये जो आइकॉन है मैं ये ले लेता हूँ यहाँ से, और आइकॉन की जगह पुट इन दिस, and cn can be icon class name, this can be icon, so that you can reduce it down to class name string हो जाएगी, you can reduce it down to just first icon, but icons are sorted। icon class name मैं बताता हूँ कैसे, but here class name would be bg green 500, and it can be second icon। cool, so that is why थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाएगा, बट इतना भी नहीं रिक्वायर्ड। ऐसे ही दूसरा आइकॉन आ गया और दूसरे आइकॉन का बैकग्राउंड आ गया। यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स डिपेंडिंग अपॉन हाउ ईजियर यू वांट दिस टू बी। नाउ बैज
ideally you can have this kind of a badge, this kind of a badge, this or this. I'm going to keep it simple. AK-15 wala ho gaya, which is nice. Second, I'll just do this failed, and I'm going to just say this text red 500, and this is going to be no borders, BG red 100 border red 200. तो अभी आएगा हमारे पास में failed, ये आइकॉन में नहीं चाहिए. That is why I like this approach. It's easier for me to just change a few things. अब ये देखो, अब दिक्कत क्या आएगी यहाँ पे बताता हूँ. ये जब यहाँ आ जाएगा तो this is trying to split, which I don't want. I want it to overflow actually. So I'll try to do a few things here. No wrap, or I can say width 20 space no wrap. मैक्स वर्थ एक्सेस भी नहीं चाहिए भाई, मेरे को तो चाहिए 16 रैम. सो इट इज़ नाइसली अलाइंड राइट देयर. ये आ गया तुम्हारे पास में. पर्सनलाइज्ड ईमेल नहीं है भाई, उसका नाम है पीयर रिव्यू, विच इज़ हियर. नाउ यू सी स्टार्टिंग टू टेक शेप. आइकन का साइज, आइकन कंटेनर का साइज एक्चुअली थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ. इट्स लुक्स नाइस. राउंडेड ठीक है, कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, टोटली डिपेंड्स ब्रो. अब इसका कर देते हैं एक तीसरा, content drafting. It's called content drafting, and it has got to be orange. Let's see, yellow, and has to say processing yellow. Everything you can pass in from this, bro. Actually, like this const card items title personalized, ठीक है, description and this, ठीक है. ये तुमने कार्ड आइटम्स बना, दिस इज व्हाई आई लव एआई. कार्ड आइटम्स बना ली इनसाइड ऑफ एन एरे. यू कैन जस्ट गो अहेड एंड remove this card items dot map index idx, and you just loop through it. Nice, super clean. सो कार्ड आइटम्स आ गए इधर. इसमें मेरे टाइटल डिस्क्रिप्शन बैज और आइकॉन नहीं दे रहा है. ये आइकॉन आई नीड टू पास. आइकॉन वुड बी फर्स्ट आइकॉन, सेकंड आइकॉन, थर्ड आइकॉन, आइकॉन क्लास नेम BG blue 500, BG orange 500, and BG red. Or orange was here, red was here. Third icon I need to import. Now you have everything back how it's supposed to be. Width कहाँ गई भाई इसकी? Max width 16 and width full. Text left. It starts from here-ish. And similarly we can generate 3-4 more. Fourth icon का BG black, which I love absolutely. It has to be admin approval, which Mishra never approves. It has to be the same as processing. And the fifth one is weekly campaign report. It has to be BG indigo or purple, but I'll keep indigo for now. Generated campaign, which is this, and it has to take that timer thing which we have over here. Every time I feel like cutting down to some shortcut, I just don't. You gotta set the details, bro. SEO audit, ठीक है. अब हम इसमें एक और काम कर सकते हैं भाई. Since we are here, we can call this card item, and you can also pass in the index, or we can just do like this. Keys initial would be opacity 0, y0. It has to be while in view. इसके साथ मैं कुछ और करना चाहता हूँ भाई. Once they are here, I want to have some sort of difference. I'm not sure, but this is fine. This is looking okay. Decent for now, bro. दूसरे वाले पे आ जाते हैं भाई, जिसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है. Just this role based access. अब इसका पूरा ही different skeleton होगा भाई. Second, so I will remove everything from here, and I will remove everything that I can find, and I'll quick fix delete all unused imports, and I have skeleton 2, and I'll go to index again. Skeleton 2 already there. Mask वाला ठीक है तो, but अभी के लिए नहीं चाहिए, so I'll remove this from here. Skeleton 2 में मैं डाल दूंगा ABCD, ANCD भी चलेगा. This is there. ठीक है, आ गया. मेरे को इंसेट 0 नहीं चाहिए, एब्सोलूट नहीं चाहिए प्रॉबेबली. मेरे को चाहिए फ्लेक्स आइटम्स, जस्टिफाई भी नहीं चाहिए मे बी. मेरे को जो चाहिए वो मैं देख लेता हूँ अभी. वी गॉट ग्रिड्स, ओके, तो हम कॉल इट रो, एंड इसके अंदर स्केल है जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है. एंड देन वी गॉट these images, and these images have a shadow on top of them, which is pretty nice, which can be a gradient though. We'll see how we can put it, but abhi ke liye first I need to
image नहीं मिलेगी, so I'll probably take images from somewhere else. I want to make this also which is a background gradient, तो वो देखते कैसे करना है. बट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके बनाते हैं फटाफट. तो लेट्स सी भाई, पहले तो ग्रिड डॉट ग्रिड, ग्रिड कॉल्स 5, गैप, गैप कितना है, 1 मान लेते हैं, ठीक है. फिर हमें चाहिए div क्लास नेम बराबर साइज 10 राउंडेड md, बॉर्डर बॉर्डर डैश्ड, बॉर्डर न्यूट्रल 200, कूल. थोड़ा बड़ा चाहिए, साइज 20 राउंडेड, एंड यहाँ पे हमें चाहिए p8, ठीक है, x8, दिस इज फाइन. और इसको बोल देता हूँ, कंटेनर बोलना चाहता हूँ बट आइटम वुड वर्क. ये हो गई हमारी आइटम. नाउ आइटम कैन टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स, but the very first thing that it should take is children और क्लास नेम. तो मैं क्लास नेम यहाँ पास कर दूंगा. बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, देर आर टू थिंग्स दैट आई वांट टू डू हेयर. फर्स्ट कि यहाँ पे जो स्केल्स है वो डालने हैं, दूसरा इसके बैकग्राउंड है, तीसरा एक इमेज है. I can pass in the image and then that image takes up everything. But I also want to animate all of these boxes with images at random, popping at random. That is what I want to do. अगर चिल्ड्रन है तो ठीक है, नहीं तो भाई random images pop in होंगी. And I need those random images to pop in. And I can do that using set interval or set timeout, whatever. It can have an image by default and it goes and comes at random times. That is what I want to do. Except for this, which I'll do randomize false. तो ये नहीं होगा. तो पहले ये बना लेते हैं, फिर देखेंगे. We need to distribute these components, right? अब local में लोग कर पाते नहीं कर पाते, not our thing. उसको फिक्स करना रहता है, because if you distribute and if you have it on AWS, it's better. So I'll just go to Unsplash rather. Source can be this. Next dot config में जाके हमें डालना पड़ेगा Unsplash का images.unsplash, which is fine. Source would be this and source would be a string. Cool. ये हो गया हमारे पास में. Now there are two things that I want to do. First I want to have scales. So if you remember pattern fg जो हमने डाला था, that I'm going to copy from here and I'll paste it. Similarly I'll also add pattern fg हो गया. अब मेरे को वो चाहिए absolute insert 0. Where is it? Pattern is here and this is what I need. I'll just copy paste this for now and I'll paste it inside of this and I'll call this relative. Scales दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं for some reason. अब दिख रहे हैं, थोड़े से बाहर जा रहे हैं, which I don't want, and I want to give it p1 by default instead of neutral and white. I want to give it neutral only. Maybe not 1 pixel, 0.5 pixel would work. इतना तो चाहिए. रिपीट कर देता हूँ मैं इसको 5 पे, दैट इट्स डेंसर. अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ एक और कंटेनर, नॉट हेयर, नॉट हेयर, डेफिनेटली नॉट हेयर. और मैंने PPX दिया ना इसको, यहाँ पे P1 दिया, तो मैं दूंगा BG ब्लैक. ये दिख रहा है आपको, एंड राउंडेड एक्सेल आई गिव इट. थोड़ा सा दिखेगा आपको यहाँ. Instead of P1 I can give it P2 also. Size 18 M auto, that is nicely here. Or not even this, not even absolute. ये भी नहीं करना, साइज भी नहीं करना भाई. I'll do it flex item center justify center. Okay, width full, h full, bg black, so that pixel point मेरे को यहाँ दिखे. And I want to do it rounded xl. तो मेरे को पिक्सल पॉइंट दिख रहा है, मैं इसको P2 दूंगा तो it will adapt to the size also, which is exactly what I want. Instead of P1 I'll just have P.5, P2 pixels.
1 पिक्सल भाई, 2 भी नहीं चाहिए। एंड राउंडेड कैन बी, कितना है बार वाला एक्सेल, मतलब कैलकुलेट हो कितना आ रहा है भाई, बता ही नहीं रहा। दिस वुड वर्क फॉर नाउ। और मेरे को ये नहीं चाहिए, आई वॉन्ट बीजी ग्रेडियंट टू बी आर फ्रॉम ब्लैक वाया ट्रांसपेरेंट टू ब्लैक। So you get this a little shade, and I want to do it again relative, and I want to have image tag here, and then I want to have all of this, which is the image. I want it to be rounded 12 pixels, and I want to no fill and stuff, bro. Height would be 80, width would be 80, and once you see this, I want it to be object cover, and I want it to be p 2px. So the outer border radius that you see, that is because of that. And I want it to be 1 pixel instead. And I want it to be relative z20. So it's on top, sitting on top. And maybe, just maybe, I don't want to use this image. Maybe I'll use something else. But for now, this works. Not of BG black or get a done BG white also. This would work as well, or 500 so that you can actually see what's going on. I think I'll keep this for now. This is something that you have to sweat pool class name children देखते बाद में काम आएगा या नहीं. 5 डाल देता हूँ, गैप कुछ ज़्यादा ही है. Item can be size 20 की जगह I'll do width full and aspect square, and size मैंने और कहीं दे रखा है क्या भाई? width full h full दे रखी है तो फिर बैकग्राउंड क्यों दिख रहा है इतना सारा? Height 80, width 80, 120. Now it's fine. Now it is fine. This will be an entire motion container. वो बताऊंगा कैसे. अभी के लिए I'll just pass in a different set of images. Our source copy images. This source would be this. Copy images. This source would be this. Copy image address. Source would be this. Copy image address. Source would be this. So you have different images now. Now that you're here. And again, I want to have the same row down below, but instead of 4, I want to have 3, or instead of 5 I want to have 4. I don't want to have this, and maybe I just want to restrict the size now that I think of it. Flex 1 तो है ना, flex call item center justify. ठीक है, इतना बड़ा भी नहीं चाहिए भाई. Maybe I'll have just size 40 or 20. Let's see how it behaves now. Instead of grid, it has to be justify center, and it has to be justify. Now if I do width full, will it react? The only problem here is it takes in a lot of width, which I don't want actually. I want it to be same size and stuff so that it takes lesser. Maybe I can play with max width. I can have size, or let's say max width SM, MX auto, MD कर देते हैं, that it's nearly there. This will work. This I can live with it. प्रॉब्लम इज ऊपर मेरे को पाँचों खाली चाहिए, फिर नीचे चाहिए, फिर ऊपर चाहिए, फिर नीचे चाहिए. मेरे को हाइट इसकी थोड़ी ज़्यादा चाहिए. दैट वी कैन अगेन प्ले विद, बट आई हैव वन मोर रो टू गो फॉर. एंड मे बी आई डोंट वांट 4 here, I want here, and I want it to be 5, or let's say 4. I want to copy this, paste here, and it has to be grid calls 5, no max width, no MX auto, no justify center, 5 items, and here I want 4 items, which is this, and here I want justify center, max width and stuff, so that it's opposite. Beach wali image I want logo, so instead image source I can pass in children है नहीं तो image, which is here, and I don't want show gradient would be false, तो इसमें show gradient और डाल देता हूँ मैं एक true. शो ग्रेडियंट नहीं बोलना है मेरे को, इसको बोलना है कंटेनर क्लास नेम bg white, and I can pass in container class name. Container class name would go exactly here. ठीक है, I'll call it container class name. Container class name has to be bg white,
and since it's a gradient, I'll have to do bg gradient 2 और from via white कर दूंगा to white via white from white, that you see. यहाँ क्यों नहीं दिख रही, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? कंटेनर क्लास नेम दिया तो ब्लू नहीं आ रहा है, हैज टू बी, हाँ क्योंकि स्केल ऊपर आ रहा था ना, ठीक है। लोगो क्लास नेम size 12. So you see enforce icon. I think they have something by instead of white, it can be from black by 50 via transparent to black by 50. हाँ ये चलेगा. Should I'll have to do dot h full w full. I have to give pg white. Rounded excel flex item center justify. देखो कितना css लिखना पड़ता है भाई. Rounded 12 pixels. So do you have it here? मेरे को इसमें एक चीज़ चाहिए, एक तो गैप ज़्यादा चाहिए भाई. सांस लेने की जगह दो, नहीं चाहिए खून आज़ादी दो. गैप 2 दे दिया, इधर गैप 4 दे तो दिया. ऊपर नीचे का गैप नहीं आ रहा है क्या? I don't want to have a mask going on. तो mask radial from 50%. Doesn't work. 20%. It's better. Mask L from 50%. Mask R from 50%. ठीक है, मास्किंग हो गई इधर ठीक ठाक. थोड़ा बेटर मास्क कर सकते हैं, बी से भी ला सकते हैं फ्रॉम 50%. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, पहले तो इसको उठा के थोड़ा मैं ऊपर रख लेता हूँ भाई. तो माइनस ट्रांसलेट एक्स और वाई 10. मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ रैंडमली इमेजेस आएँ और जाएँ. उसके लिए क्या करूँगा मैं, आई विल कन्वर्ट दिस टू मोशन डेव. Or maybe if the image is not passed, just have in a scale source and ये चाहिए मेरे को, नहीं तो नहीं चाहिए. देख रहे हैं आप तुम्हें शेड्स सेट्स, जबकि मुझे यहाँ तो ये चाहिए, बट थर्ड वाला यहाँ आ जाएगा, फोर्थ वाला नहीं चाहिए. ठीक है, बाकी कैन स्टे द सेम. और नीचे वाले में भी मेरे को मे बी 2 ही चाहिए, और मे बी यहाँ पे भी नहीं चाहिए भाई. इसके 2 में नहीं चाहिए, इसका ये नहीं चाहिए, इसका ये नहीं चाहिए. This looks fine, no? दो ही तो चाहिए. मास्क आर मास्कल में भी मैं कैन रिमूव. थोड़ा दिख रहा है विच इज़ फाइन. रेडियल ग्रेडियंट से ही हो रहा है उसका, तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट मच. तो ये तो बन रहा है भाई. अभी इमेजेस तो मैंने सारी सेम शेप रखी हैं, थोड़ी वैरायटी तो होनी चाहिए. बाई को लाएंगे. फर्स्ट की सेकंड इमेज इज गोइंग टू बी दिस. थर्ड और फोर्थ में दोनों चेंज करनी है. ये ले लेते भाई को. थर्ड ग्रिड का फर्स्ट दिस, and second would be this, madam. Second would be this. तो हमारे पास में एक ग्रिड बन गई. थोड़ा इनसे खेल सकता है भाई, खेला तो जा सकता. खेलें क्या, थोड़ा आइटम है हमारे पास में. कॉल इट मोशन डॉट डिव. इम्पोर्ट मोशन फ्रॉम मोशन रिएक्ट. देखते काम कर रहा है, सही कर रहा है. इनिशियल ओपेसिटी 0, फिल्टर ब्लड 10 px, animate and transition duration. ठीक है, this is fine. Transition duration would be math.floor math.random into 10 plus 1 और into देखते 10 सेकेंड तो बहुत ज़्यादा हो गया. I need it between 0.2 second and
1 second. And similarly, delay would be the same. Initial. ठीक है. और मे बी मैं उसको इस इमेज पे ना डालकर, just maybe I create this a motion div and I add it here. Randomly appear होगा ना. मैं चाहता हूँ कि भाई कभी ये चली जाए और ये आ जाए, ये चली जाए, ये आ जाए. दैट विल डू लेटर ऑन दिस वीडियो, बट फॉर नाउ दिस वर्क्स. पहले ये बना देते हैं भाई गार्ड रेल इंजन, और अप्रूवल क्यू इज ऑल्सो फाइन. मूव ऑन टू द थर्ड सेक्शन नाउ, विच इज दिस. ओके, डिवाइड एक्स डाल रखा है क्या भाई? थोड़ा वियर्ड हो रहा है ये डिवाइड वाला सिस्टम. इसको मैं बाद में टैकल करूँगा, अभी हटा ही रहा हूँ पूरा ही. सो आई हैव दीज थिंग्स टॉप एंड बॉटम. आई वांटेड टू बी अ बॉर्डर एक्स मे बी. इट इज़ नाइसली सेपरेटेड हेयर. रोल बेस्ड एक्सेस में मेरे को क्या चाहिए? अप्रूवल क्यू चाहिए पहली बात तो. अप्रूवल क्यू हैज़ टू बी सिंपल, सेंस दिस सेंस दैट. अब हमें क्या चाहिए? प्रोसेसिंग और फीडबैक. ये दो आइकॉन्स अगेन विल हैव टू पोस्ट, बट कॉग आइकन, स्टार आइकन, आई थिंक यू कैन मैनेज दैट. देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू डू हियर दो. दीज एरो आइकॉन्स इन प्रोसेस. पहले तो ये बैकग्राउंड बना लेते हैं. सो यू गो टू ui.hturnity.com, ग्रिड एंड डॉट डॉट बैकग्राउंड्स पे जाओगे तो ये दो डॉट बैकग्राउंड देखते हो ना कैसे आता है. दिस इज exactly this linear gradient that you have 1 pixel, just like we have this slanted gradient. उसके लिए we have this linear gradient that you can pretty much copy and paste. Simple, very simple. Just copy this class name. ये नहीं चाहिए, सॉरी लेडी. और इसको बोल देंगे skeleton 3. So first I'll have to create the third one. First था हमारे पास में, first का probably I'll take in the container and RAFC third skeleton 3, and I'll paste this here. Go to secondary or index, and I'll paste skeleton 3 here. Once I go to skeleton 3, I'll see it is empty. I do not want this background and stuff. BG neutral 100 not required. ठीक है. बॉर्डर है तो वो भी नॉट रिक्वायर्ड. ये ज़ीरो पता नहीं कहाँ से आ रहा है. skeleton 3 मुझे दिख रहा है, वो इम्पोर्टेंट बात है. Z20 डाल देता हूँ मैं इसमें. skeleton 3 इज़ हेयर. नाइस. मे बी आई डोंट वांट इट टू बी एब्सोल्यूट, मे बी आई वांट, डजंट मैटर. क्योंकि skeleton की हमारे ऑलरेडी हाइट है. अब मेरे को क्या चाहिए? एक बैकग्राउंड चाहिए, विच इज़ प्रिटी मच दिस दैट आई वांट टू कॉपी. I'll just copy the code here. ये भाई फिक्स्ड रहना चाहिए भाई इधर. तो मेरे को बेसिकली ये चीज़ चाहिए. एलिप्स वेलिप्स भी नहीं चाहिए एक बार के लिए. वो मैं डाल लूँगा अपने आप, ये मैं डाल लूँगा अपने आप. CN में इंपोर्ट कर लूँगा, देखते हैं कैसा लगता है. आ रहा है नहीं आ रहा है? ग्रिड आ रही है. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड अ ग्रिड एंड इट इज़ हेयर. इंस्टेड ऑफ दीज हार्ड कोडेड कलर्स आई कैन नाउ डू var color neutral 800, and it will reflect 800, but I do not want 800. I want maybe 300 or maybe 200. 200 is fine. और डार्क में मे बी आई वॉन्ट कलर 800, बट ये जो हल्का हल्का सुरूर आ रहा है मास्क रेडियल, वो भी मैं एक बार के लिए हटा दूंगा. सो दैट यू सी द इंटायर ग्रिड फॉर नाउ. ठीक है. इंसेट y2 इंसेट x10 मुझे नहीं चाहिए. इट इज़ नाइसली सेंटर्ड हेयर अराउंड. इंसेट y2 भी नहीं चाहिए मेरे को. इंसेट 0 ही दे दे. इट इज़ नाइसली सेंटर्ड. मेरे को दो चीज़ें चाहिए भाई इसमें. ठीक है. एक तो चाहिए इस डिव को खोलना, और इसमें चाहिए फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर. ठीक है, ये चाहिए मुझे ताकि आई कैन पेस्ट दीज थिंग्स. प्रोसेसिंग एंड फीडबैक, आई जस्ट क्विकली क्रिएट दिस. px4 py2 rounded full bg orange 500 border orange 300 bg orange 100 text orange 500 font medium, and it has to say processing 1. It has to say processing. Cool. And I want cog icon, Lucide icon settings is there. I'll live with it. Size 4. All right. Flex item center gap 2.
ये चाहिए। दूसरा मेरे को चाहिए सिमिलर, but instead icon sparkles is there, and it is called feedback, and instead of orange it has to be green. So you see now we have these, and I want to split them by a gap of 10, not here but here. ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। दूसरा मेरे को एक ये चाहिए, तो ये आइकॉन आई जस्ट कॉपी मैन। इसका सीधा वेरिएंट नहीं है क्या? आई डू नॉट नो, बट आई जस्ट कॉपी दिस, copy paste as SVG, and I'll go to have illustration CS general, yes, but I don't want to copy it here. I want to copy it grid.tsx, export const arrow illustration. अब हमारे पास इधर हम इसको इमेज की तरह भी कर सकते थे, बट लेट्स यूज इलस्ट्रेशन फॉर नाउ। तो अब मैं क्या करूँगा, प्रॉप्स पास कर दिए क्या? props are going to pass here. Props. Third में I want to have this arrow illustration. अच्छी थोड़ी जगह लेगा ये, वो आ जाता है यहाँ पे। Instead I want to be absolute inset x0 top 2, inset x0 mx auto, centered nicely, and this would do. I do not want it here though, I want it outside. कूल, यू सी वो नीचे दिख रहा है ऊपर दिख रहा है, वो वाली चीज़ आ जाती है। थोड़ा सा ये फट क्यों रहा है भाई? आई थिंक आई प्रॉब्ली यूज एन इमेज इंस्टेड, क्योंकि यहाँ तो परफेक्ट दिख रहा है, बट आई प्रॉब्ली शुड यूज एन इमेज। ठीक है, अब वापस से भाई एक काम करना है, इसको लेटाना है, और एक वो बॉटम इमेज भी है भाई, वो भी उसको ले लेता है, बट लेट्स टेक इट एज एन इमेज इंस्टेड। ये ग्रिड हटाएंगे, और इट इज़ एन एरो राइट, एक्सपोर्ट, कॉपी एसवीजी कर लेता हूँ भाई, बट ग्रिड में ओ भाई साहब बहुत बड़ा, 4000 pixels, and this thing we'll have to rotate. So again transform, rotate y, rotate z, whatever. Instead I want to rotate in the other direction this time, not this, but rotate y, not this, but rotate z. Okay, and I want to rotate it good, real good, best, और रोटेट करेंगे भाई। ठीक है, इसको भी रोटेट करेंगे मे बी, और एंड इट हैज, इसको कमांड सी कर दे भाई। ठीक है, हाइट वगैरह बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी, वो देखते हैं करते हैं, बट दिस इज फाइनिश, एंड आई वांट इट टू बी Z30, that it's on top, the other is at the bottom anyway. So this would work, except I want to restrict the max width to SM or LG, and height can be 200%. Alright, inset 0 won't work. And minus inset by 2%. Now you see it. Now it's fine. Maybe थोड़ा नीचे हो सकता है भाई, अरे एरोज को और नीचे करना पड़ेगा, बट दिस शुड वर्क फॉर नाउ। एब्सोल्यूट लेफ्ट 10, ओके,
20 top minus top 2 दिख थोड़ा and stop 4. I'm just trying to align them a bit and left 20 40 maybe. बहुत टाइम लेगा भाई तेरे को मोबाइल रिस्पॉन्सिव करने में बट वर्थ इट. माइनस बॉटम 10 एंड इनसेट एक्स कूल है. और इस पे अब मास्क रेडियल just close, not bad. I would say not bad. मास्क आर भी डाल देते क्योंकि इतना नहीं चाहिए. These can be made better. This is fine. This would work. I'd take it. This would work. ये चल जाएगा. Cool. And lastly, what I want to have here is इसका भी role based access का भी border भी दे देते हैं. आज auto complete खराब हो गया भाई. Lastly, I have this, which is nothing, very simple, but icons make your game. अच्छा इससे आरो तो मैं भूल ही गया. आरो भी डालेंगे. ब्रांड एंड स्टाइल. दिस इज टैब्स वाला सेक्शन. यहाँ पे क्या करना है? वंस यू क्लिक ऑन इट दीज थिंग्स वुड चेंज. इट्स मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. तो भाई फटाफट ये वाला पार्ट भी बना लेते हैं. इसका लास्ट पार्ट जो कि था गार्ड रेल इंजन. बॉर्डर आर नहीं चाहिए. सो दिस इज गॉन. इसका स्केलेटन मुझे चाहिए लेकिन डिफरेंट. सो दिस हैज टू बी दिस. अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो डिफरेंट आ रहा है बट दिस थिंग विच इज दिस रिमेन्स द सेम राइट. तो ये फटाफट कॉपी कर लेते हैं हम एजेंट स्टूडियो से. एंड फर्स्ट स्केलेटन 3 की जगह आई कॉल इट स्केलेटन और जस्ट 4.tsx. और फीचर्स में आई थिंक इट इज कॉल्ड स्केलेटन 1 फर्स्ट. तो आई जस्ट कॉपी दिस और 4 में जाके आई डू स्केलेटन 4. So if I just go here, tertiary one, and paste this, you will see that we have got this जो कि नहीं चाहिए. गलत चुरा लिया. एजेंट स्टूडियो चाहिए. एजेंट स्टूडियो का skeleton है skeleton 1. I'll copy this inside of skeleton 4, which is this, and I'll paste it, call it skeleton 4, and I'll go here and 3 किधर है बे? tertiary. अब आ गया हमारे पास में. ये सब नहीं चाहिए फिलहाल. एकदम खुला खाता चाहिए. एंड दिस कैन स्टे. The only thing that I want changing is icon है and these icons will need these icons are important for this. I'll need these 5 and 5 का for example brand and style tone guidelines. पहली बात तो ये मेरे को इतने सारे नहीं चाहिए. टाइटल आइकॉन डिस्क्रिप्शन skeleton 4 में चलते हैं अपन. आइकॉन title description and tags are fine, and instead of these being many I'll just have one. And this is card with random colors, that is also fine. It has to say brand and style. For example, top icon it will be brand and style. फिर आएगा टोन गाइडलाइंस. बट इंस्टेड ऑफ दिस बीइंग नेस्टेड मे बी जस्ट मे बी टॉप आइकॉन ये फ्लेक्स आता है ना. So instead I want this to be here, not here. I'll call it flex item center, and this top icon I'll paste here. Rest can be flex call, and you see here brand and style guidelines. ठीक है, ये ठीक है. And this has to be tone guidelines, and it has to be rounded SM border neutral 200 P2. ठीक है. And border dashed. ठीक है. And PX2 PY would be 1, and text would be SM, and MY would be 2 maybe. So that little spaced out. MT2 MB4 ये हो गया. और मे बी इतनी हाइट नहीं चाहिए मेरे को इसकी, क्योंकि पहले ही ऊपर इतना सारा आ जाएगा तो ठीक है. इतनी भी स्टाइल हो तो कोई दिक्कत नहीं. अब मेरे को ये डिफरेंट टैग्स चाहिए. ये जो टैग्स है ये दिस विल वर्क, दिस विल वर्क, दिस विल वर्क, दिस विल वर्क. फॉर नाउ इधर फाइल आइकॉन ही रख देंगे हम. एंड हमें क्या चाहिए? ब्रांड एंड स्टाइल. वी गॉट 5 ऑफ दीज. सो कॉन्स्ट आइटम्स वुड बी, टाइटल वुड बी brand and style. Icon would be file icon, class name दे देते हैं. Description would be this, tags would be this.
ठीक है, ये हो गया एक। और हमें क्या करना है, ये जो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे हमें करना है गैप 4 आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर फ्लेक्स रैप। अब कंप्लाइंस एंड स्ट्रैटेजी चाहिए दूसरा, तो वी आर गोइंग टू प्रॉब्ली लूप इट थ्रू कंप्लाइंस एंड पॉलिसी। अब टैबलर खोल लेते भाई। सो आई गो एंड सर्च आइकॉन्स, आई सर्च फाइल आइकॉन। कोई फाइल दिख रही है टेढ़ी मेढ़ी, मे बी आई यूज दिस text green 500. Again you can change it depending upon you. Third would be content safety filters. I'll search for a feather icon, ये भी चल जाएगा। Indigo 500, write some copy already इसने कर दिया AI ने। Fourth would be approval triggers. I'll search for some hand icon. I'll use this mouse pointer maybe, and text neutral 500 चल जाएगा, copy change कर देंगे। And the fifth one would be quality output quality checks, which will be this. ठीक है, quality checks would be search, and it can be this icon would be search. Once you refresh this, you see nothing right now because we are going to add buttons, so it will be button. Class name would be whatever, but for now पहले उससे पहले we are going to loop, so it will be items dot map item index or idx, and I'll call it button. Class name would be something px2 py1 rounded sm, and border वगैरह हम देंगे बाद में। item dot title मैं रखना चाहता हूँ, and once you see we have this, which we do not want inside of it though, we want it outside, so we'll do this div and we'll paste it here. It is outside exactly how we want it, and this be mb4. अब मेरे को इसमें दो चीज़ें करनी है, पहले तो फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर, एंड दिस कैन बी आइटम डॉट आइकॉन। ब्रांड एंड स्टाइल का आइकॉन नहीं आ रहा है समाओ, फाइल आइकॉन दिया था मैंने। दिस कैन बी, अभी कुछ भी डाल दो यार अभी के लिए, but you have to make sure icons are nice. अभी I want to rush this video, so that is why मैं नहीं कर रहा हूँ, but you get the point, icons can be nice. Output quality checks का मैं कर दूंगा purple. पर्पल हो क्यों नहीं रहा? पर्पल, it has to be purple. ऐसे पर्पल, एंड इधर मैं डाल दूंगा थोड़ा सा गैप, विच इज गैप 2 और गैप 1 इज फाइन। अब मेरे को एक चीज़ और डालनी है इधर, क्लास नेम वुड बी bg blue 100, border blue 200. Similarly I want to add it to every other class which will be here, and it'll auto generate for me. That's what I like about it, because ये कलर का मेरे को एक म्यूटेड कलर चाहिए बैकग्राउंड, और एक बॉर्डर हल्का सा हार्ड, बहुत हार्ड, and I want to add this. Lastly what I'll do is cn, and I'll add class name. Now you see this, and it is a button. I want to do const selected set selected is equal to use state items 0. कूल बटन है अब हमारे पास में यहाँ पे। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, ये जो बीजी वीजी है हमारे पास में आया है और ये आइकॉन आया है, ये हम कार्ड में भी पास कर दें, तो इंस्टेड ऑफ दिस इट विल बी कार्ड 0 आइटम 0 सेलेक्ट किया मैंने, टॉप आइकन विल बी सिलेक्टेड डॉट आइकॉन, टैग्स वुड बी सिलेक्टेड डॉट टैग्स, ये सब हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और डिस्क्रिप्शन तो हमारे पास में है। अब ये बैकग्राउंड में जो आ रहा है हमारे पास में आइकॉन, ये रैंडम कलर्स में हटा दूंगा इधर से। टॉप आइकन हमारे पास में ऑलरेडी है। once I refresh, brand and style, title, tone guidelines, description ठीक है। are we even looping these? selected icon है, on click would be set selected item would be this, so once I select you see it changing, राइट। अब मेरे को यहाँ पे क्लास नेम भी पास करनी है, विच विल बी द क्लास नेम दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम आइटम, एंड क्लास नेम वुड बी सिलेक्टेड डॉट क्लास नेम। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ बीजी ब्लू 500 एंड स्टफ, आई विल जस्ट ऐड क्लास नेम। तो ऐसे अब मैं चेंज कर रहा हूँ तो ये चेंज हो रही है चीज़ें। साइज़ में थोड़ा सा इसका बढ़ा दूंगा, मे बी आई डू 8 और 6 इज फाइन। यहाँ पे मैं साइज़ दे सकता हूँ जो भी ये आइकॉन्स है मेरे पास में, साइज़ 4 जैसे मैंने यहाँ दे रखा है, यहाँ नहीं दिया, साइज़ 4
एंड फाइनली साइज 4। नीटली चेंज हो रही है सारी चीजें। कर्सर पॉइंटर दे दूंगा भाई मैं इसको एक, और एक्टिव पे स्केल 98, ट्रांजिशन ड्यूरेशन वुड बी 200। यू सी दिस नाइस क्लिक इफेक्ट। हम मेरे को क्या चाहिए भाई, दो चार चीजें चाहिए। Selected, if it changes, I want to do something, man. Maybe this entirely, and this can be a motion div. Initial opacity 0, animate opacity 1, INITIL. So तुम देखोगे अगर मैं रिफ्रेश करूं तो ओपेसिटी आती है, लेकिन अगर मैं चेंज करूं तो नहीं आती। दैट इज बिकॉज की इज चेंजिंग, एंड की वुड बी title. Title should be selected dot title. Now it is changing. Maybe animate presence हमें नहीं चाहिए क्योंकि exit animation हम लगा नहीं रहे हैं. So once I refresh, ये आ रहा है, 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 ये आ रहा है. Output again. This also we need to be motion dot div or motion dot p. Initial opacity 0. Animate opacity would be 1 and transition delay would be 0. So once I do this, ठीक है, again I need to pass in a key would be title. So once I select, ये key थोड़ी replicate हो रही है which I don't want, so maybe I'll just motion dot div के ऊपर key डाल दूंगा मैं, would be title, और यहाँ से हटा दूंगा. ठीक है, अब ये थोड़ा बेकार लग रहा है because obviously we'll do something. Filter blur 10 px, filter blur 0 px. टोन एंड गाइडलाइंस वाला पूरा सेक्शन मैं चाहता हूँ एक साथ आ जाए. मोशन डॉट डिव, एंड इट हैज टू बी मोशन डॉट डिव. इनिशियल opacity 0, animate opacity 1, transition delay 0.2, or 0.2 is fine. Let's see. Once I refresh this, ये आ रहा है. And these tags, man, I want them to be staggered and opacity में आते हैं, तो I'll call it motion dot div. पहले देखता हूँ आता है तो सही है. And initial opacity 0, animate opacity 1, delay सही हो रहा है एकदम. ठीक है. Similarly this, maybe इसका y से खेल सकते हैं थोड़ा. y would be -10 and y would be 0. ठीक है. ठीक है, अब हमें थोड़ा पता चलना चाहिए सिलेक्टेड है कि नहीं है. तो यहाँ पे हमने क्लास नेम तो दे दी है इसमें डिव में. सिलेक्टेड डॉट यहाँ चाहिए भाई. सिलेक्टेड डॉट इज इक्वल टू item डॉट टाइटल एंड opacity 100, otherwise it has to be opacity. अभी opacity 50 है. once I come here, once I do this, you see visual output मिल जा रहा है थोड़ा. We can also auto play it, which we'll do later once we do the entire section. Now you have this, which is a part of this bento item grid that you see here, which is pretty nice if you ask me. इसकी मैक्स विड्थ रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. ऑटो टेक्स्ट कैन बी SM or even XS. This will do max width. We can do LG, so it is nicely centered. But you get all the points, right? सब चल रहा है, अच्छा लग रहा है. This is nice. This is a nice bento grid item. Bento grid तो नहीं, this is a simple grid. हर चीज बेंटो नहीं होती. So you get the point, right? Let's move on to the next section really quickly, and it is the pricing, and then the FAQ, and then the footer, and then we'll be done with it for good. And then we'll focus on the micro interactions, probably 2 more videos. So yeah, this is a standard one. Okay, this is nice. This can be a grid. Okay, let's go ahead and build the pricing section really fast. I'll call it फीचर्स. मेन काम हो गया भाई, मेन काम तो था वो हो गया है. I'll just quickly commit, add changes and push. Cool. Now I'll go to pricing, RAFC, pricing. I'll go to page, I'll import pricing, and I'll go
Here I'll call it section because this is a section that we have. Trusted by 500 plus enterprise companies. Again, this is a badge, this is a title, this is a description. These are some of the icons that we have. Cool. Let's go. Grid of column 2. Simple. पहले pricing import कर ले तो देख रही है आ रही है कि नहीं. Pricing आ रही है. मेरे को थोड़ी padding चाहिए. Class name. अरे वाह भाई. Class name would be PT10, PT20, PT32. Instead of PT, I wanted PY. PY would work. Container that I need. And I don't want this heading just yet. I want grid, or I can do that in the container itself. Grid calls 1MD, grid calls 2 gap 10. यहाँ पे I need one heading as H2 तो already है, and it is to be affordable pricing, easy scaling. Pricing heading I'm going to import. Similarly, I'm going to have subheading, which I will be prompted for. Start small, this and that, whatever, you get the point, right? Now, if we see here, we have this, and I want it to be a flex call gap 4 div. थोड़ी सी margin top दे देंगे, MT2, and we have these list items. But before that, I can also do this as P, which is trusted by 500 plus employees. Chalega. And I have these icons. I'll quickly copy these icons. I'll copy in them general only. Pricing icons का हो गया, पहला हो गया export const lock icon props and return this. I'll call it props. Nice and easy. Second one is this. I'll call it users props. Again, I'll just paste it. I'll save it and I'll pass in props. Nice and easy. Last one, I got it as loop icon. I'll say props and return this, pass in the. I'll go back to pricing. I'll just create another div here, or I can call it UL, which is better. And class name would be list style. List none hota hai. List style type none. Li would be first is the icon, and then I call it built-in guardrails. एक चीज़ मेरे को इसमें ट्राई करनी थी. स्टार फ्लेक्स स्टार आइटम सेंटर स्टार गैप 2. ये होता है चाइल्ड सिलेक्टर, मतलब ऑल टोटल डिसेंडेंट्स, राइट? तो देखोगे ना तुम, इज एम्परसेंड और डायरेक्ट स्टार माने डायरेक्ट चिल्ड्रन जो भी हैं उसके लिए स्टाइल लग जाएगा. तो ये देख रहे हो. और इसको मैं फ्लेक्स कॉल कर देता हूँ, गैप 2 दे देता हूँ. सो नाउ यू सी, आपको हर एल स्टाइल नहीं करना पड़ा, बट यू कैन pick this direct descendant element या child element, all of your child elements, and you can style them like that, and you don't have to do class name flex item center gap 2. You don't have to do this. You can just select star items, which is a nice way of doing it. I like it. Second would be, instead it will be users icon, I guess. Third would be shield or whatever. What was the last icon that I call it? Loop icon, users icon, loop icon. So I don't want them here. Instead, I want them in icons index. I want to paste them here and add icons general icons. Third one, loop icon. कहाँ से आ रहा है भाई? lock icon, loop side से नहीं चाहिए मेरे को, यहाँ से चाहिए. That is how it was. Cool. We have it here. We have it. First is built-in guardrails, second is agent orchestration, and the third is human in loop. Cool. थोड़ा font bold हो सकता है. Star font medium. तो देखो थोड़े मोटे हो गए भाई, मोटे हो गए. मैं भी मोटा हो गया हूँ भाई. बट यू गेट द पॉइंट, राइट? सिंपल येट इफेक्टिव. थोड़ी स्पेसिंग बेटर हो सकती है. MT8 और 4 वुड डू. इट विल बी MT4. थोड़ा स्पेस्ड आउट है. नाउ वी गॉट plans or grid items which we have over here. ठीक है. Again simple, nothing fancy. दो कार्ड्स है हमारे पास में. कार्ड्स इधर ही बना लेते हैं भाई. div first will be div class name P4MD P8 rounded 2XL BG neutral 100. We'll close that div. Cool. It says $10 per month. $10 span per month. MON. It can be per month. This can be, this class name would be text per month. semi height और उसके तो नहीं है भाई.
per month can be text neutral 500 text to Excel, MD text to Excel, LG text to Excel, 3XL, Excel, SM. सटल बना देंगे इसको थोड़ा सा. $10 per month. There will come subheading. Subheading will say perfect for individuals, blah de blah de blah. And then we have a CTA button that we can take from navbar, but before that I'm going to call it grid. Grid calls 1 MD, grid calls 2 gap 10, so that it stays inside, not here. Okay, this is fine, this would do. And the last part is that we're going to capture from hero, which is called button shadow brand start your free trial. But instead we're not going to have shadow brand there. We're just going to import button and we are going to start your free trial, class name MT4. Shadow भी आ रही है, सब काम कर रहा है. Right side में we've got list items. List items we are going to steal from here exactly like these, और वो हमें चाहिए यहाँ पे. And it is going to be check icon from Lucite or Tabular, this, or maybe filled version of it, this, this. ठीक है. And we want one AI agent included. Standard integrations, basic approval flows. And the last part would be 7-day activity logs. See how we are doing this. Probably we do not want here. Instead it will be here, that it's side by side. Icon check field would be class name, size 5 or 4, text neutral 500, or size 5 maybe bro. And this I'm gonna copy, and maybe we want them to be centered, so I'll do item center, so that these are nicely aligned. ठीक है, ये हो गया $10 per month वाला. Now this is Squircle. I can go ahead and teach you how to make a Squircle instead, but that is a different part of it, man. I don't want to do it. I don't like Squircles much. Squircle is something which is not exactly rounded, but you see this is a different kind of a border radius. This is called a Squircle. You can't make it through CSS. You'll have to use SVGs for it, and I don't want to complicate it for this one. $60 mal1, and now is the time to create a component out of it. So const pricing card. It will take a few things. First it will take price, then it will take description, then CTA link, then CTA text, then steps. Steps would be an array. अभी define करता हूँ मैं. पहले I'll just copy this part of it and return it here. Now price can be a string, description CTA would be icon and text. That too I want to refactor because I want to have a step, and a step would be this. Step would take just title, and the title would be string. Cool. And this step I'm gonna refactor this to include step instead. Title AI generated. This I don't need. Similarly, I'm going to do it for everything here. I don't want this. I want this. I want last one this. ठीक है, ये अब और simplify हो गया. And step now I want just to be array of strings. This can be title, per month stays, or price, and dollar I'll append in front of it. This will be description. Start your free trial. It will be CTA text. Link href would be CTA link. Cool. Link I can import from next link. Now you have this. I'm gonna paste this pricing card here, and I'm gonna do all of these. So price would be 10, description this. You see exactly this. Now if I copy and paste this, right, you'll see we get one more. Instead I want it to be class name flex call gap 4. Instead I want to be 60, and I want this orchestration advanced approval routing. So steps dot map step index, it can be step, key would be step plus index,
and title would be step. This can go. We have this, and this completes our pricing section, except I think these are centered vertically. So I might go ahead and item center here. So it looks a bit better, which is nice. This looks nice. This is a nice pricing section. And we have all this. Now we can use shard scene to even theme it. Maybe later we'll do it. But abhi to chalega. I can make it a shard scene compatible theme which works. Awesome. FAQ section में बना लेते हैं. First I'll copy this icon or completely copy SVG. I'll paste in illustrations though, because that's where it should be. General में ही डाल देता हूँ. Export const user chat icon props and return, and I'll have props here. I'll create an FAQ component, RAFC, FAQs. It will be a section and class name would be py this that. Correct. ये FAQs I'll go ahead and paste. FAQs post कर देता हूँ इधर. Again, I'll have a container here and I'll call it this. First, I'll have user chat icon, which is this chat icon आ गया इधर. I'll have a heading called frequently asked questions heading. Frequently asked questions आ गया. Class name दे दूंगा MT10 MD MT20 और MY rather. That nicely spaced out. अब पहला सवाल है what is agent force, and title, description and an icon. Again I'll create a const question component turn div. It'll take question answer will be title string. ठीक है. It'll be a button. Class name would be width full p4 mdp8 and I want it to be nothing though. Flex item center justify between. ठीक है. यहाँ पे it'll be h3. Question would be, let's say for example this, what is agent force AI, and then I'll have an icon which I'll call div. Class name would be size 6 rounded full bg black for now abhi ke liye. Flex item center justify center and I'll have tabular icons which I'll see minus hai kya. Minus icon is there. Icon minus. Class name would be size 6 text white. And I'll paste this question over here और एक ये और दे देता हूँ मैं. हाँ चलेगा. What you see here right now is this. I want BG neutral 100 so that nicely laid out. P4 MDP8 यहाँ नहीं चाहिए. P4 MDP8 यहाँ चाहिए. And it has to be rounded full overflow hidden. थोड़ी styling. Class name text LGMG text 2XL font would be bold. आ गया. And can say font would be display. ठीक है. What is agent force? We'll have a description over here. P tag and description is this is something agent force लिख देते हैं इसको. And this goes out somehow, which I don't want. I want it to be this. And this can be text left MT4 text neutral 600. ठीक है. ये expanded है by default. अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इसको motion button बनाऊंगा. उसके लिए I'll have to use client and import motion from motion react. ठीक है. इसको लिख दें const open set open use state would be false. Use state I'll import open and. ठीक है. So once I click on this button which is on click, set open would be not open. So once I click, दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है नहीं दिख रहा. इसको मेरे को क्या करना है, absolute inset 0 and this has to be relative. अब similarly मेरे को चाहिए icon plus भी होगा, इसमें एक plus भी है. Instead I want icon plus
I will do this. Cn open and scale 0, rotate 90. ठीक है. Similarly, for this, it will be Cn open and scale 100, rotate 0. By default, scale 0, rotate 90, and that too in minus direction. So once we click plus minus आ रहा है, transition all duration 200, transition all duration 200. देख रहा है हल्का एनिमेशन प्लस माइनस पे. इसको विल कन्वर्ट टू अ मोशन div or motion p tag. Style would be, or even animate would work. Animate would be height open auto else 0. Key would be string of open. Transition duration 0.2. Maybe style would work. But there is this weird glitch that happens once the height goes out. We can maybe play with the opacity of it. So we can do opacity open 1, otherwise 0. Opacity would be by default 0. Exit opacity would be by default 0. So now once we have it, थोड़ा jerk है, which I don't want, and const height ref would be use ref null, and ref would be height ref, and calculate height would be obviously height ref dot current. अगर height ref dot current है तो scroll height ले लेंगे, plus 16 padding करनी है नहीं करनी कर सकते हैं, and height would be instead calculate height, not auto. So let's see. But again, it is not animating. Opacity is fine. Exit भी ठीक है. Maybe I'll have overflow hidden here. Let's see. Still a bit of jerk. Ease would be ease out. Still jerk. Why is that? Maybe I don't want animate presence. फिर exit काम नहीं कर रहा. Instead of this, I'll maybe have style prop. Exit initial हटा दूं. Ease would be ease out. कुछ काम नहीं कर रहा है भाई. Sometimes these things can take time, you know. So I have motion.div on the p tag here, which is causing a weird jerk. I'll call it motion.div instead. I'll remove animate presence. I'll remove open and not required. I'll have it on the p tag here. Class name would be text left and this and that, and see. So maybe I'll just have class name overflow hidden here. Okay, key string में भी नहीं चाहिए. Initial में false कर दूंगा. Now it's working. Now you see, it is working. Super nice. Again, I want to create more of these components or more of these questions. I'll do const questions question answer question answer question answer. I'll copy some of the other questions. What is Agentforce built for? How does Agentforce work with AI? And now what I'm going to do here is I'm going to map through these questions and I want to print these questions. So you see this, I'll have flex call gap for everything is nicely aligned. थोड़ा इसमें effect ला सकते हैं भाई. Print effect, so that we can do. Okay, this has to be first
answer, and this has to be question. So you see, and what I want to do here is I want to dot split with a space dot map item index, and I want to split a motion dot span. Key would be item plus index and item, and NBSP, so that we get things the right way. Maybe the first one is a bigger string. Good test case, I would say. This is what I was afraid of. For this, I need to have white space, break spaces. Maybe I don't want to overdo this one. Just keep it simple with a motion div with initial opacity 0 and animate opacity 1, transition delay 0.1. So close, and here key would be string open. This is nice little FAQ section that we have here. Simple है भाई, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है. Lastly, we are going to create this footer section, which is looking really simple but not that simple. Cool. Lastly, we'll create this footer and I'll call it footer.tsx rafc footer, and it'll be footer tag layout, and navbar के नीचे हम दे देंगे footer. Import this footer, and you have this footer here. Cool. Again, class name would be border t border neutral 200, dark border neutral 800, py10 md py20 lg py32, and you have this footer. Inside of the footer I need a container, and this container would be class name grid, और grid चाहिए हमें 1 2 3 4 5. Grid calls 1 md, grid calls 5, gap 10. Cool. अब यहाँ पे हमारे पास में होगा first one, and it will be call span 2. It will be agent force, which is logo. कंटेनर इंपोर्ट कर लेता हूँ. You see, refresh भाई, agent force आ गया, लोगो आ गया. दूसरा चाहिए हमें सेल्फ ऑब्जर्वेबल सब हेडिंग बोल देते हैं भाई इसको, AI driven outcome something, and then a button with start a 30-day trial. Class name would be shadow brand, that you see the shadow here, shadow. इसको बोल देते हैं flex call gap 4 item start left aligned. ठीक है, ये आ गया तुम्हारा. दूसरा हमें चाहिए प्रोडक्ट कंपनी, सो आई कॉल इट const product or links title product children. Title would be agent simulator. ठीक है. दूसरा href would be hashtag for now.
and I'll call it generate 5 more so that I don't have to do that much of work. This is nice. And maybe I don't want a nested one. Maybe I'll call it product. And similarly, I want for company, generate 5 pages for company regular pages. ठीक है, यही चाहिए थे मेरे को. तो पहले मैं लिख दूंगा, अब जो हमारा डिव आएगा उसमें होगा h4, it is going to be product, class name, text base, font medium, text neutral 600. It's going to be class name, flex call gap 4. And again, यहाँ पे we are going to have nav items, which is ul. Class name would be list none. And I'm going to have an li, which is going to be link tag. Href would be item.href, item.title. These we have to map. So product.map item index. This li tag I'm going to copy from here and paste it here. Key would be item.title, link from next link, and we have this here. Link is defined, bro. You are just slow. थक गो रे. ये आ गए. अब मेरे को चाहिए flex call gap 2. ठीक है, प्रोडक्ट आ गया. Class name would be text neutral 600, text neutral 400, hover text black, transition duration 200. ठीक है, nice है. Similarly, want to have one for, oh bro, ये हटा देना भाई. Similarly, I want to have one for company. It has to say company, about us, whatever. And then we have a newsletter section. We call it again div. Class name would be whatever. Flex call gap 4. And यहाँ पे हम डाल देंगे newsletter, which can be simple this only. Newsletter, I don't know if people even use it, but div border neutral 100 bg neutral 100 p4 और p कुछ नहीं चाहिए. Instead I want to have an input here. Class name बराबर bg transparent outline none. Cool. And this can be rounded md and px4p/2. And type would be email, placeholder would be your email, placeholder neutral 400, text neutral 600, text would be sm. आ रहा है. एंड यहाँ पे हमें एक बटन चाहिए. बटन के ऊपर आइकॉन है सेंड का, विच इज़ अ प्लेन आइकॉन. send this icon and I want it to be this. Class name text white, class name px4p/2 rounded smbg black.
item center, justify center, and PPX थोड़ा सा अंदर हो ये size और size 4 would be appropriate. So this is your footer. Last thing what I want to do here is I want to add this grid, the grid that you saw earlier also. I'm going to copy paste that grid itself here and I'm going to call it relative. I'm going to copy paste that grid from feature secondary. मैंने कहीं से लिया था, I think third skeleton tertiary में. This div I'll copy. I'll go to footer. I'm going to paste this here. CN में ले लूँगा. And I'm going to self close this div. देखता हूँ कैसा लग रहा है. By default कहीं तो जा रहा है. And it has to be relative so that it stays within bounds. और rotate Z नहीं करना है मुझे. It stays here. Rotate X नहीं करना है maybe. और Y नहीं करना है भाई. It has to lay down and I'm gonna give it a perspective distant here so that it lies down. Overflow hidden so that it is there. थोड़ा ज़्यादा ही लेटा देंगे, पूरा लेटा देंगे, 70 कर देंगे. ज़्यादा हो गया, 60 ठीक है. It has to be relative Z20, relative Z20 so that ये ऊपर आ जाए भाई हमारे. Instead of 200 maybe I'll have 100 muted and I'll have also mask radial from 50%. Radial mask आ गया इस पे. And now you have this nicely laid out grid at the bottom, which I wanted in the first place, bro. ये लास्ट पार्ट है. इसमें मेरे को दो चार चीज़ें करनी है. वो दो चार चीज़ें क्या है वो बता देता हूँ. पहले तो बेसिक इसको थोड़ा एनिमेट करना है. दूसरा इसके इनिशियल पोजीशंस मेरे को चेंज करने. फॉर एग्जांपल अब मैं रिफ्रेश करूँ तो सब एक ही साइड से आ रहे हैं, उतना बेटर नहीं लगता, वो चेंज करना है. थर्ड पार्ट इज इसके साथ ये जो हो रहा है, अगर मैं यहाँ रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, वो मुझे चाहिए. सेम इज़ विद दिस. इसके साथ मैं थोड़ा ऑटो प्ले एनिमेशन डालना चाहता हूँ. ये तीन चार चीज़ें करूँगा इस वीडियो में. और साथ में मे बी आई कैन हैव अ CTA. यहाँ पे CTA नहीं है, इज वियर्ड. तो अलावा CTA वो देखेंगे कैसे बनाना है. बट स्टार्ट करते हैं फटाफट. पहले क्या था हमारा, पहले इसका बैकग्राउंड चेंज करूँ भाई मैं, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा क्यों है. तो चलते हैं भाई डायरेक्ट इसमें. तो कैंपेन प्लानर लुक्स बेटर, थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है तो अच्छा लगता है. साथ में डिस्क्रिप्शन का मेरे को शायद फॉन्ट लाइट चाहिए. सो इट इज़ बेटर एंड टेक्स्ट न्यूट्रल कैन बी 500. तो ये बेटर दिख रहा है, ये ठीक है, इतना चल जाएगा. दिस इज़ फाइन. मेन चीज़ पे आते हैं. और दूसरा, ये बार बार अब मैं हवर इस पे कर रहा हूँ, मेरे को वो नहीं चाहिए. तो मेरे को क्या चाहिए, एक ही बार होना चाहिए. उसके लिए मैं क्या करूँगा, व्यू पोर्ट वंस ट्रू डाल दूंगा. मतलब एक ही बार ये इन व्यू में, जब जब भी ये वायलिन व्यू आएगा तो ये एनिमेशन रिपीट होता है. लेकिन आप व्यू पोर्ट वंस ट्रू लिख दोगे तो वो सिर्फ एक ही बार होगा. मतलब जैसे एनिमेट हो रहा है तो दोबारा नहीं होगा. इनफैक्ट इफ़ आई रिफ्रेश, ये देखो एक ही बार हो रहा है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट. मैं नहीं चाहता कि ये 5-6 बार हो, मैं चाहता हूँ कि ये एक ही बार हो और वो एक ही बार हो रहा है. ठीक है, अब आ जाते हैं भाई इस वाले पे. अब ये क्या करना है मेरे को भाई, मेरे को ये जैसे कार्ड पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा, ऐसा वाला लॉजिक चाहिए. तो उसको पहले देख लेते हैं कैसे करना है. गो टू दी फाइल विच इज़ एजेंट स्टूडियो. सर्च एजेंट स्टूडियो, कौन सा ये रहा. इसके अंदर ये पहला स्केलेटन है मेरा और ये दीज आर द कार्ड्स दैट आई हैव. फर्स्ट व्हाट आई डू इज आई कन्वर्ट देम इनटू आइटम्स.
and title will be connect data, top icon would be whatever, और ये AI मेरी हेल्प कर देगा इसमें मेरे को तीनों बनाने में. Tags would be these. ठीक है, ये नहीं चाहिए. And what I'll do is I'll loop through these cards now and I'll call it items dot map item index and I'll do exactly this. अब आप देखोगे मैं ये हटाऊंगा तो आपको exactly यही चीज दिखेगी, except now I can animate it. Simple. Motion dot div, again motion, हाथी मेरा साथी, motion मेरा साथी. Initial opacity would be 0, y would be -10 and scale would be 0.8. Similarly, we'll have animate in this case 0 and scale would be 1. Transition duration would be 0.5. ease would be out. Transition. अब आप देखोगे कि सारे ही ऐसे आ रहे हैं. Maybe this can be 0.3, not sure. I'm still trying. तो ये आ रहा है भाई, ठीक है. अब मैं क्या चाहता हूँ, ये एक एक करके आए, तो उसके लिए I'll have to use some React logic here. क्या कर सकते हैं उसके लिए? Tags would be these. ठीक है, ये नहीं चाहिए. And what I'll do is I'll loop through these cards now and I'll call it items dot map. Quickly items dot map item index and I'll do exactly this. अब आप देखोगे मैं ये हटाऊंगा तो आपको exactly यही चीज दिखेगी, except now I can animate it. How I can animate it is simple. Motion dot div, again motion, हाथी मेरा साथी, motion मेरा साथी. Initial opacity would be 0, y would be -10 and scale would be 0.8. Similarly, we'll have animate in this case. Opacity would be 1, y would be 0 and scale would be 1. Transition duration would be 0.5. ease would be ease out. Transition. तो अब आप देखोगे कि सारे ऐसे आ रहे हैं. Maybe this can be 0.3, not sure. I'm still trying. चाहता हूँ ये एक एक करके आए, तो उसके लिए I'll have to use some React logic here. क्या कर सकते हैं उसके लिए? मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले const animate और active cards set active cards is equal to use state null for now and I'll import use state, है ना. अब मैं क्या चाहता हूँ, ये एनिमेट होए आफ्टर एवरी 1 सेकेंड. मेरे पास नया कार्ड है तो उसके लिए मेरे को लॉजिक लिखना पड़ेगा. यूज इफेक्ट सेट कॉन्स्ट इंटरवल इज इक्वल टू सेट इंटरवल. इसको एनिमेट करना है, एक के बाद एक आनी चाहिए. उसके पहले ये तो तुमने देख लिया कैसे होता है, फिर रिफ्रेश. ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ ये एक के बाद एक आए. उसके लिए मेरे को लॉजिक लिखना पड़ेगा विच इज सेट इंटरवल और सेट एक्टिव आइटम्स वुड बी prev. If not prev, तो I'll have to return either items 0 or nothing. Both would work. Set active cards. ठीक है, this इसका टाइप भी डिफाइन कर ही देता हूँ, लगे हाथ भाई. टाइप आइटम would be title string top icon react dot react node description string and tags would be this and this will be either item or null. Cool. Prev. तो if not prev return items. दूसरा items dot length which is these items which we have, माने हमें ऑटो लूप नहीं करना है, मतलब लूप नहीं करना है, उसके लिए हम ये लिख रहे हैं. तो विल डू क्लियर इंटरवल एंड इंटरवल. ठीक है, एंड फाइनली और इसमें यू कैन रिटर्न prev. फाइनली व्हाट यू कैन डू इज रिटर्न, और इसमें मेरे को क्या करना है, जनरली लोग ये करते हैं prev एंड आपके आइटम्स prev डॉट लेंथ
बट ये चीज़ मेरे को पीछे चाहिए ताकि वो ऊपर आए। और ये जो इंटरवल की ड्यूरेशन है वो मैं चाह रहा हूँ 1 सेकंड में चले। तो अब रिफ्रेश करते हैं, सब एक साथ आ रहा है क्योंकि हमने एक्टिव कार्ड्स यूज़ नहीं किया है, हमने आइटम्स यूज़ किया। अब एक्टिव कार्ड्स यूज़ कर देंगे। ओके, कनेक्ट डेटा, डिफाइन लॉजिक, ह्यूमन एंड लूप। अब आप देखोगे कि ये ढंग से एनिमेट नहीं हो रहा है, मतलब कार्ड्स तो आ रहे हैं, ऊपर वाला चेंज हो रहा है, देखो ये वाला अभी नीचे शिफ्ट हो जाएगा, अभी नीचे शिफ्ट हो जाएगा, बट इट इज़ नॉट स्मूथ। उसके लिए यू विल हैव टू हैव दिस कूल लेआउट होना चाहिए एंड यू रिफ्रेश, आया तो कूल, ये हो रहा है फाइनली। तो यही एनिमेशन चाहिए था मेरे को। अब देखोगे तुम कि अगर मैं यहाँ रिफ्रेश करूँ तो ये ऑलरेडी एनिमेशन चल रहा है, वो मेरे को नहीं चाहिए। उसके लिए क्या होता है कि यूज़ इन व्यू करके हुक होता है मोशन से, कॉल इट यूज़ इन व्यू, एंड इसमें हम रिफाइन कर सकते हैं, रेफ डिफाइन करना है, कॉन्स्ट रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ HTML div element and it will be null for now. Use ref I'll import. Similarly, I'll also import const is in view, use in view and ref. और ये कंटेनर जब व्यू में है, माने this, I'll call it ref and if at all this is in view, then only I'll animate this. Got it? So once I go back, I refresh, wait for here a few seconds, and let's see. अब मैं आया तभी वो एनिमेट करना शुरू करेगा। कूल, प्रीटी कूल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव दिस हेयर, जो कि रिफ्रेश करो तो starting from the same point, I do not want that. What I want here is instead I'll go to this multi-agent orchestration और इसका skeleton. I want to pass in another property which is called initial position, and I want to call it, let's say, 80 degrees, and I want to go to globals.css and I want to pass initial position here. All right, and based on that I want to rotate and translate. So what I'm going to do here is I am going to do exactly that. I'm going to rotate this, but instead of 0 degrees, which will be the default value which you have, I'm going to take it var initial position or 0 degree. 0 is the default one. Okay. First, then we have the translate, which is the translate position, which works X and Y both mein karta hai. And the third one would be the anti-rotation that we want to give, and it will be calc -1 into var initial position or 0 degree. 0 degree is by default, but initial positions we are pasting. What is it? Cool. Similarly, we need to have it here as well. So it will be var, and I'll call it, and we'll keep it really simple. I want to add 360 degrees to whatever we had as the initial position. I'm going to do calculate var initial position 0 degree plus 360 degrees. And similarly, I want to have this exactly the same thing, except I want -1 into var. Cool. So once I have the initial position for some, see, this starts from down below and keeps rotating. Now I can give this initial position to all of these, so they can start from different angles. I'll give it 140. I'll give it 240, not 400, and I'll give it 20 degrees. Let's see. Now everyone is starting from their own positions. What I want to do is this campaign planner, I maybe want to copy it. I want to give it another card. Where is campaign planner? Skeleton card and description. I'll do it. Description and I don't want to pass in the description, and call it ready-made solutions. Optional. So once I have this, I'll maybe have initial as 260 and
Instead of 30, it can be 40 seconds and it can be 10 pixels. So ready-made solutions is here. I can make it better maybe. I can make it 60 degrees. That it's somewhere down below, and I can make it rotate faster at 20 seconds. So you see, everything is falling into place. That's exactly what I wanted. And this is done. Move on to the next one. We have these here. Now, instead of this, what I want to do here is, let's play with it a bit. Personalized email first. Open audit trail. Okay. We've got this skeleton. Pretty neat. Motion div already we have it here. What I want to do here is this card item has to come and this has to be while in view, that only when we are here it animates. And the card items description, I want to be a motion div, motion p, motion div, whatever, and I want to split it by character dot map item idx, and I want to have a motion span here with a key of idx and item goes inside. I want to have it initial opacity 0, animate opacity 1, or rather while in view opacity 1, and transition would be, delay would be idx into 0.01 plus the index that we have of this card, which I'm going to pass in a second here, and I'm going to call it index, and index would be a number. Cool. And now we have this index as well. I want to do it index into 0 plus or into both would work, 0.03. So let's see how this works out to be. See, there is a little delay. These generate themselves. So if I tweak it a bit, you'll see this looks better. And what we had earlier, this is much better. If I scroll up, wait for a bit, scroll down, it is going to repeat. Same thing I want with this also, role based access, because these are bento grid items or simple grid items that can take it, that can have that animation going on again and again in view. Cool. So once I'm going down and I come back up, you see the animation stays. Cool. Lastly, I want to do here is I want to have an autoplay here. So this thing actually autoplays. So I'll call it guardrail engine. I will search for it. Cool. Guardrail. Rail bana raha hai bhai. Guardrail engine, and we have got the skeleton 4. Now what we want to do here is we want to play with it a bit. Brand style. So first what I want to do here is selected, set selected we already have. What I want to do here is introduce an autoplay function. I'll call it const start autoplay would be, first need a interval reference here. So I'll quickly define it. Interval ref would be use ref, and I can define the type later. For now null, and it can be, yeah, this would do use ref. Cool. Similarly, I also want to keep a track of the current index. So I'll call it current index ref would be use ref, and it will be initialized to 0. Now start autoplay. What I want to do here is I also want to define a stop autoplay, which is going to do nothing but if interval ref dot current, I just want to remove the interval. So clear interval ref dot current, and I want to also set interval ref dot current is equal to null. Cool. The first thing that I want to do here is stop
autoplay, and then I want to play with it, play with the looping function of it. So interval ref dot current would be set interval, and I want to have it happening after every 2000 milliseconds or 2 seconds. So it'll be current index ref dot current would be, I want to skip it to the next one. So it'll be current index ref dot current plus 1 modulo items dot length, so that it loops. So if it is 1 2 3 4 5 and I want to come back it to 1, or 0 1 2 3 4 make me want to come back to 1 or 0, modulo operator would be helpful. And set selected would be items current index ref dot current. Cool. This is start autoplay, end autoplay, whatever. For now, what I want to do is use effect, and by default I want it to start auto play. And return would be stop auto. After mounting, always clear your timeouts, your intervals, your everything's. Cool. Now if I come back here and refresh, you'll see it is moving. Compliance, content, approval, and output. Similarly, I want to have some little thing over here which is relative. I want to have one motion div, and it'll be class name would be absolute insert 0 rounded, say 5x, shadow inner. Cool. And I want to have it only showing onto the selected dot title is equal to item dot title, and I want to show this. So you see there will be a small little shadow, and I want to have a layout ID of selected item, so this will move as well. You see this is moving now. It will go from here to here to here to here to here. This is a small nice little touch that I like adding to these type of cards which you have. You can do all sorts of things, man. You can have corners for these, whichever makes more sense. You can do that, and it'll take into effect. Cool, this is done. What else do we have? All the micro interactions are done. This is nice. I like this. What I want to have is, first I want to check mobile responsiveness. Okay, this is not that cool. Why is it that far away? We'll have to check. And we'll have to go to landing images. Okay, this is fine. Translate text 28. Okay, maybe don't want that. Landing images, and it has to be MD, and it can be translate x2 or 5 for that matter, so that it stays right in the center. Nice, works for me for now. Trusted by, I don't trusted by modern operators, class name, hidden MD blocks, so that we don't have any blind breaks here. This would work. These can be a little shorter. These campaign planners and stuff, we'll take care of that later maybe. These are huge ass skeletons for mobiles, but that would work for now. And we have got weird boxes now, which you see border bottom, it is fine here, it is fine here, fine here. It is fine here, not weird though. I do not see any lines on the right, which is good. So this would work. This is okay. This is okay. Okay, I don't want, okay, audit trail. There is some border R, and I
don't want it to be on smaller screens, so that will go. Approval queue, that will be on MD screens. This would go, and this works. Cool. This is nice. This is looking decent. Okay, this is fine. This is looking decent. I think this can be smaller. One AI agent included. And I go to pricing cards and I go to the step component, and it can be text SMMD, text base, so that these are a little smaller. The $61, which is pricing, this can be bigger. Text LG, not this, but heading. Why is this heading smaller? Heading can be bigger. Text 3XL. That's nice. It has to be bigger actually on mobile phone. So yeah, see, we had to change it at just one place. It makes a lot of sense. This is fine. This would work. This would work for now. This is fine-ish. This would work, yeah, that works. This can be a bit full though. The call spanning can happen. This you have it here. So this looks a bit bearable now. And description, which we have here, will be text balance. Just properly balanced. Maybe we can fix up the description, but this is what we have right now. This looks good. These fetching data can be changed. Row text SM MD to text XS. So this is fixed. Similarly, this campaign planner can also be fixed. And I think it is this skeleton card text SM. It will be MD text SM and it will be text XS. Similar to description, text SM would be, and it will be text maybe 10 pixels. So this works. Similar with the tag, we don't want it to be this big, and we will have the same set of things over here. Makes it look better. Now this is nice. This looks nice. Entire landing is pretty nice. And there you have it. Oh, this is also nice. Why is this a bit fucked up? Okay, where is it? Z50, not 50, but 30. Now it's working. Now you have it. Looks real nice. And there you have it, folks. अब इसमें दो चार चीज़ें होंगी क्योंकि मेरे को इसको बेचना भी है, तो मैं अलग से करूँगा, सब कुछ नहीं बता सकते. So thank you so much for watching the entire series. This marks the end of what we have covered so far. We have covered a lot of things in Tailwind series. It was a pleasure to teach it to you guys. This final project took quite some time for me to build, design, get it designed from Dhruvin. Shout out to Dhruvin for designing an amazing template that we could code right in front of everyone. And thank you so much for watching this video. And I'll see you in the next one. Tab tak ke liye bye. Do like this video. Do subscribe to the channel. And I'll come up with more playlists in the future. Probably the next would be GSAP or Anime.js. I don't know. I'll see. I'll take a time off from teaching and I'll talk about a bit of other things like freelancing and design engineering. But I'll take some time off teaching Tailwind and stuff or some other course materials maybe. But thank you so much for joining in and I'll see you in the next one. तब तक के लिए जय हिंद भाई. बहुत काम करो, बहुत मेहनत करो. Next set of videos में मिलूंगा. मिलते हैं जल्दी.